practicing primarily the 12 markers. Okay, जो 8 markers हैं in your PED, they are pretty much straightforward. सही है, इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें बतानी भी नहीं होती except for कि PED की relevance क्या है with revenue या what is how the firms can use the knowledge of XED to classify products and so on and so forth. So let's look at question number 2 का B. Discuss whether income elasticity of demand is the most useful measure of elasticity to a firm. So it's a 12-mark question. Again, now what you have to do, you have to explain whether or not YED is the most useful measure of elasticity. Okay? So first, in this question, what you have to do, you have to explain what is YED, the formula, सही है. So पहले आपने क्या किया, आपने पहले explain कर दिया कि YED क्या है. YED measures the responsiveness of quantity demanded due to change in income of the customer. YED is measured by this formula, percentage change in quantity demanded upon percentage change in income. Now, usefulness of YED. What are the usefulness of YED? Usefulness is linked with the value of YED. Say we have 3 cases of YED. YED which is greater than 0. Greater than 0 का मतलब है कि YED आपकी positive. और YED positive कब होती है? When goods are normal. YED equals to 0. Say when income does not affect quantity demanded. Usually happens in the case of goods that are necessity, such as for example medicine, and then we have YED which is less than 0 or it is negative when goods are inferior. सही, ये आपने बता दिया. Then you can explain okay, how does the firm use the knowledge of YED when the goods are normal and when the goods are inferior, such as can focus on production planning, pricing strategy, marketing of goods. So yeah, so when goods are normal, when average income is increasing, you will focus on the production planning of normal goods. You will be increasing as a producer the prices of normal goods because their demand will be increasing. Or you will be focusing more on the marketing of normal goods when your average GDP, average income of the population is increasing. And when average income is falling, you will do the same for inferior goods. फिर आप inferior goods की production planning ज़्यादा करोगे, raw material ज़्यादा acquire करोगे because you know कि goods जो है वो inferior है and their demand will soon rise. And you can show that by drawing the graph.
You have income on the y-axis and quantity on the x-axis. This is for normal goods. If your income is increasing, quantity demanded is also increasing, and this is for inferior goods, because when the income is increasing, the quantity demanded is going down, it is falling. Say, यहाँ तक आपने बता दिया कि what is the importance, what is the relevance of YED for the firm. Now, just look at the question again. Whether it is the most useful measure of elasticity or not. Say, अब इसमें क्या होगा? Now you have to explain what are other measures of elasticity, such as PED, which measures the responsiveness of quantity demanded when there is a change in the price. And PED is also helpful in pricing, in telling whether you should market the good or not, in production planning, in revenue maximization, etc. You have other measures such as PES, which measures the quantity supplied, percentage or responsiveness of quantity supplied as there is a change in the price of the good. And PES is also helpful in production planning, in telling what is the nature of the product and how elastic they can make the good in order to maximize their revenue. And then you have the last one, which is XCD, which measures the responsiveness of quantity demanded of good A as a result of a change in the price of good B. And XCD is important in determining whether we should increase the quantity, whether we should increase the price if the quantity demanded of the other good is increasing, or whether we should decrease the price based upon the relationship, whether the goods are substitute or the goods are normal. And then you will write the evaluation. So in your evaluation, you will tell to conclude YED is an important elasticity as it measures how the quantity demanded will change when average income is changing. However, in other instances, maybe PED will be more important. Why PED will be more important? Like for example, if आपकी इकोनॉमी में जो एवरेज जीडीपी है वो इंक्रीज ना कर रहा या वो डिक्रीज भी ना कर रहा, स्टैगनेंट हो आपकी जीडीपी ग्रोथ, तो उसमें तो आपको आईडी की यूजफुलनेस है ही नहीं. सही है, तो उसमें क्या होगा? उसमें यू विल रिलाई मोर ऑन पीईडी. या इवन इफ द प्राइसेस आर नॉट चेंजिंग एंड द इनकम्स आर नॉट चेंजिंग, but the demand of a substitute or a complement are either increasing or decreasing, in that instance XCD will be more important. Say, so you can just write the counter by taking only one elasticity, या अगर आपको बाकियों का भी लिखना हो तो आप उनका भी लिख सकते हो कि भाई PED इस वजह से इंपॉर्टेंट हो सकती है, PES इस वजह से इंपॉर्टेंट हो सकती है, या XCD will be important because of these reasons. Say, are we good? Can we move ahead?
discuss the extent to which the concept of price elasticity of demand, income elasticity of demand, and price elasticity of supply would be helpful to an organization responsible for the growth of tourism to a holiday resort. Say, so this is a bit of a difficult question. अभी तक जितने भी हम लोग ने या elasticity की questions किए हैं उसमें बड़ा straight forward approach होती थी. इस वाले question में क्या हो रहा है? They have given you a scenario. Scenario क्या है? That you have to look about the importance of PED, YED, and PES with respect to an organization responsible for the growth of tourism. सही है. तो बेसिकली आपने क्या करना है, हॉलिडे रिजॉर्ट को देखते हुए you have to explain the relevance. So first you will explain what is PED. Measures the responsiveness of quantity demanded to a change in the price. What is the formula? PED कैसे helpful होगी for holiday resorts? What do you guys think? Whether the holiday resort will be more elastic or inelastic? Are the necessity? What is the proportion of income spent? Whether it is a luxury? उसको देखते हुए आपने बताना है कि PED कैसी होगी holiday resorts की. It's a luxury. सही है, एक तो luxury है और proportion of income spent भी holiday resorts वगैरह में ज़्यादा होता है. Says that is why PED for the holiday resort should be greater than 1, and when it is greater than 1, what the firm can do? The firm can decrease the price. If you decrease the price, quantity demanded would increase by a greater proportion, and since area 3 is greater than area 1, total revenue will increase. Say तो आप ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट करोगे, आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा. से इसके साथ साथ more marketing expenditure. The firm needs to spend more on the marketing and advertisement because आपकी प्रोडक्ट की PED क्या है? It is elastic. सही है. तो जितनी ज्यादा इलास्टिक है आपको तो ज्यादा उस पे मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट पे पैसे खर्च करने चाहिए ताकि आप ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सको. सही है. या इसी के साथ साथ यू कैन यूज इट फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू रिड्यूस द प्राइस बाय गिविंग कोई discounts या कोई special offers, then you should be you should take into account कि जब आप कोई इस तरह की ऑफर दोगे तो जो नंबर ऑफ टूरिस्ट है वो ज्यादा इनफ्लो आपके पास ज्यादा हो जाएगा. और जब इनफ्लो ज्यादा होगा तो आपके पास अकोमोडेशन ज्यादा होनी चाहिए, आपके पास ज्यादा एक्टिविटीज होनी चाहिए इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दोस टूरिस्ट. सही. ये तो था PED का. The second one is YED. Then you will explain what is YED. YED measures the responsiveness of quantity demanded due to change in the income, and the formula to calculate YED is percentage change in quantity demanded upon percentage change in income. Say since it's a normal good,
इट्स अ लग्जरी गुड, इट्स अ नॉर्मल गुड. अगर आपकी इनकम बढ़ती है तभी आप ज्यादा ट्रैवल एंड टूरिज्म पे पैसे खर्च करते हो, आपका एक्सपेंस इंक्रीज होता है. सो दैट इज वाई ईडी should be greater than zero. It's a normal good. And in the case of normal good, firms should be wary of the fact if average income or GDP per capita of that region is going up, then they should increase the price, offer more services, and so on and so forth, ताकि आपके पास आपका revenue ज़्यादा maximize हो, आपके पास ज़्यादा tourist attract हो. And then you will come to PES. What should be the PES for holiday resort? PES measures the percentage or the responsiveness of quantity supplied due to change in the price measured by this formula. हाँ भाई, PES क्या होनी चाहिए हॉलिडे रिजॉर्ट्स की? Wafi, summon, animal. What should be the PES? Less than 1, greater than 1, 0. What should be the value? Zero नहीं, लेकिन still it should be highly inelastic. क्यों? Why it should be zero or it should be highly inelastic? देखो, क्योंकि हॉलिडे रिजॉर्ट वगैरह है ना, इनमें यू हैव अ फिक्स नंबर ऑफ अकोमोडेशन, फिक्स नंबर ऑफ रूम्स. आप ये तो नहीं कर सकते. हाँ, एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड की भी बात हो सकती है, बट इट इज नॉट रेलेवेंट मेरा बच्चा टू दिस पॉइंट ना. लेकिन ये है कि क्योंकि सिंस यू हैव अ फिक्स नंबर ऑफ रूम्स या फिक्स नंबर ऑफ अकोमोडेशन, फिक्स नंबर ऑफ बेड्स, तो आप उसको इंक्रीज नहीं कर सकते हो. सही है. या अगर आप इंक्रीज कर भी दोगे तो ये हो सकता है आप डबल ऑक्यूपेंसी की जगह ट्रिपल पे ले जाओ. सही है. या 4 पर्सन अकोमोडेशन कर दो पर रूम. दैट इज ऑल यू कैन डू. ये नहीं हो सकता कि आप इन द शॉर्ट रन आप जो है ना वो 100 कमरे तो आप 200 पे ले जाओ. सही है. बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल. आपके पास इतना टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है. सो यू विल एक्सप्लेन दैट इन द शॉर्ट रन PES for holiday resort will be highly inelastic because of fixed or limited number of accommodations. You cannot increase your services. You cannot increase the number of accommodations possibly available to you. So जब आपकी PES inelastic है, आपका रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन में थोड़ा सा इशू होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइस बढ़ जाए तो आप अपनी क्वांटिटी भी बढ़ा दो. सो यहाँ पे फर्म को क्या होना चाहिए? दे शुड फोकस ऑन making PES more elastic through additional campaign stuff, activities,
सही। अगर आपके पास accommodations ना भी हो तो आपके पास there should be added activities जिनको आपके टूरिस्ट एंजॉय कर लें फॉर अ टाइम भी। लाइक अगर आप उनको accommodation नहीं भी दे सकते तो ये सारी सर्विसेज दे दो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोट राइड है या कुछ इस तरह की चीज है, टूर गाइड्स हैं। सही है। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर एक्सपोजर टू द टूरिज्म, टू द टूरिस्ट। सही है। इसके बाद ये तीनों चीजें आपने बता दी कि भाई पीईडी की ये यूजफुलनेस है, वाईडी की ये यूजफुलनेस है, पीईएस की ये यूजफुलनेस है। नाउ गोइंग बैक टू द क्वेश्चन would be and discuss the extent to which the concepts of PED, YED, and PES would be helpful for the organization. So now what you will write in your evaluation? The extent to which these concepts are useful. से पहले तो आप बताओगे कि भाई these concepts are useful in determining the revenue for the firm. Like if it is if the PED is elastic, the firm can reduce the price in order to maximize the revenue. Important when your average GDP is increasing or decreasing in order to make sure whether the firm can maximize on the number of tourists or not. And PES is more useful for the producers in order to make sure that how they can make the PES more elastic in order to facilitate more customers. However, the firm cannot entirely rely on elasticities. One thing is that it is a numerical measure. And numerical measures can be prone to statistical errors, numerical errors. Their accuracy can be questioned. सही है। एक ये हो सकता है the time period. When these elasticities were calculated, like for example, अगर आप अभी tourism की elasticity calculate करोगे to the northern areas of Pakistan, वो काफी ज्यादा होगी। सही है। बहुत difference होगा as compared to the elasticities of tourism in Pakistan prior to 2008, 2007, because there was so much terrorism and everything, and people didn't prefer to go to the northern areas. But right now times are changing, so it also affects कि आपने वैल्यू कब कैलकुलेट की है, द टाइम पीरियड इज इम्पोर्टेंट, न्यूमेरिकल मेजर्स हैं इस वो दे आर प्रोन टू स्टैटिस्टिकल और न्यूमेरिकल इनएक्यूरेसीज। इसी तरह से मेनी अदर फैक्टर्स can influence planning and not just the elasticities. Like for example, if there is any unusual event happening in that time period, obviously it will affect the elasticities, affect the planning that you have done using the elasticities. इसी तरह से if there is any other factors like how the competitors are now reacting to your strategies, then obviously your elasticities will be effective, will be affected, and how the consumers are um, receiving your advertisement and everything. So yes, these are the factors that you can write in your evaluation. Are we good? Can we move ahead? Another important question related to elasticities is this one. Discuss why entrepreneurs might want to change the PED value for their product and consider the extent to which it is achievable. See? So in this question, पहले तो आप ये बताओगे कि first you will explain what is PED, how the PED is calculated, now after that जब आपने ये कर लिया पीडी का बता दिया, नाउ क्वेश्चन क्या था कि डिस्कस
why entrepreneurs might want to change the value of the PED. अगर ये change करते हैं, so what do you guys think? Whether they will be making it more elastic or less elastic? PED को 1 से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे entrepreneurs और या 1 से कम? Whether they will try to make it more, whether they will try to make it inelastic. Okay? अच्छा चलो भाई एक ये आ गया है कि they will try to make it inelastic. The PED should be less than 1. Say entrepreneurs can do it both ways. PED should be greater than 1 or it should be less than 1. Say less than 1 क्यों करना चाहेंगे? Why the entrepreneurs might want to make the value of PED less elastic or more inelastic? There's a reason. What is the reason? Price को आप increase करोगे, आपकी quantity will be less responsive. Total revenue will increase when price increases. सही है. और इसके साथ साथ क्या होगा? The firm will have less substitutes, so less competition in the market. So that is why they will try to make it less elastic or more inelastic. How they can do it? Now, coming to the point how the firms can do it. The first thing, eliminate competition. So one thing the firms can do is that they can eliminate competitors. Like अभी जो हमारे पास recent example है वो ये है how Kareem was acquired by Uber. सही. अब Uber क्या कर सकती है? Uber किसी भी time Kareem की services को पाकिस्तान में बंद कर दे. अब जब उन्होंने पाकिस्तान में Kareem की services बंद कर दी, the elasticity of demand for Uber will be inelastic. सही है, because there will be one commute service available. Apart from के Swell वगैरह भी हैं, लेकिन the major players are Uber and Kareem. So जाहिर है कि it will be more inelastic अगर आप इसको increase कर देते हो तो, अगर आपने competition को reduce कर दो. The second thing is by bringing additional uses. सही है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पेन किलर है पैनाडोल. सही है. और पैनाडोल की मार्केट में जो आपके पास बाकी पेन किलर्स हैं, ब्रोफिन है, आपका पैरासिटामोल है, डिस्प्रिन है, ये सारे कॉम्पेटिटर्स हैं. Now, in order to make the demand more inelastic, what Panadol did is that they bring additional uses. Panadol CF, cough and flu, Panadol Extra. Say so, like if somebody is suffering from cough, if somebody is suffering from flu, they can also use Panadol. सही है. वो पैनाडोल को भी यूज कर सकते हैं और एज अ पेन किलर भी पैनाडोल को यूज कर सकते हैं. सो नाउ द डिमांड विल बी मोर इनइलास्टिक फॉर पैनाडोल. इसी के साथ साथ एडेड फीचर्स. If you increase the features, if you have added features for your product, it will become more inelastic. Consumers will prefer your product अगर आपके पास कोई unique selling point है. By increasing advertisement. So advertisement has this neck. It makes people more conscious about the product. It makes people. It urges customers to buy the product. अगर आप constantly किसी भी गुड का ad देख रहे हो तो आप चाहोगे कि यार आप कुछ खरीद लो. So that is why अगर आप advertisement expenditure भी increase करते हो, your product will become more inelastic. Now coming to the PED more elastic.
If the firm wishes to make it more elastic, what will be the reason? The price went down by a very small proportion, but the quantity increases by a greater proportion. तो अगर आप PD को elastic बना देते हो, total revenue will increase if the price goes down. और उसके साथ साथ क्या होगा? Quantity will increase. Quantity demanded will increase, and when the quantity demanded is increasing, it means there is more sales volume. Sales volume आपकी increase हो जाएगी. There will be more quantity sold by the firm, and when more quantity is sold by the firm will become a major player in the market. सही है, firm जो है वो बड़ा नाम हो जाएगा market में. आपके पास ज़्यादा market share आ जाएगा, आपके पास ज़्यादा controlling power होगी in the market. And how you can do this? Now, अब elastic कैसे बनाएंगे आपने product को? How the firm can make its product more elastic? Anyone? How the firm can try to make it more elastic? Anything that comes to your mind? No, reducing the demanding, actually, they can eliminate or make it more elastic by reducing the features. सही है. अगर आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को कम कर दो, जैसे अगर आप गाड़ियों में देखो, गाड़ियों में ना यूजुअली पाकिस्तान में तीन वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस होते हैं. एक बेस वेरिएंट होता है, एक मिडिल वेरिएंट होता है और एक टॉप वेरिएंट होता है. the difference between the base variant and the top variant is that कि टॉप वेरिएंट में ऑब्वियसली ज्यादा फीचर्स होते हैं और ज्यादा फीचर्स के साथ साथ टॉप वेरिएंट ज्यादा महंगा भी होता है. तो अगर आप ये चीज देखो और उसके बाद देखो कि हालांकि प्राइसेस में इतना डिफरेंस नहीं होता, 50-60 हज़ार लाख रुपए का फर्क होता है गाड़ियों के हिसाब से. दैट इज वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन के जिस हिसाब से प्राइस, बट स्टिल द मोस्ट सोल्ड आउट वेरिएंट इज द बेस वेरिएंट. सही, बेस वेरिएंट ज्यादा सेल आउट होता है. क्यों होता है? क्योंकि उसके प्राइसेस comparatively cheaper है. So if you reduce the features in your product, it will become more elastic because the price will go down. The second thing is that by introducing additional substitutes. सही, अगर आप ही अपने प्रोडक्ट के सही अगर आप अपने ही प्रोडक्ट के प्राइसेस को अपने प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स को इंट्रोड्यूस कराओ, इट विल मेक इट मोर इलास्टिक. वन थिंग दैट यूनिलीवर डू इज दैट कि वो ना बहुत सारे ब्रांड के शैम्पूज बनाते हैं. हेड एंड शोल्डर भी है, पैंटीन भी है, लाइफ बॉय भी है. वो क्यों करते हैं भाई? अगर किसी को इफ समबडी इज नॉट सेटिस्फाइड बाय लाइफ बॉय, दे कैन स्विच टू पैंटीन, they can switch to clear, they can switch to head and shoulder. So if you introduce more substitutes to your product, you will make the demand more elastic. इसी तरह से reducing advertisement expenditure.
If you reduce the advertisement expenditure of your product, then obviously the demand will become more elastic, क्योंकि जब आपके ads नहीं चल रहे होंगे टीवी पे या social media campaigns नहीं होंगी, so the customer will obviously they have more chances of switching to other products and the demand will become more elastic. So this is how the firm can make the product more elastic or more elastic. Now, whether it is possible or not, so in your evaluation, you will write to conclude the firm can make their product more elastic, and by making it more elastic, they can capture a greater market share, or they can make the product more inelastic in order to maximize the total revenue and profitability by increasing the price. However, whether it is possible for the firm or not depends upon how the competitors react. सही है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एडेड फीचर्स इंट्रोड्यूस करा है अपने प्रोडक्ट में टू मेक इट मोर इनइलास्टिक, लेकिन फॉरन ही वो कॉपी कैट हो गया, सही है, आपने कोई पेटेंट्स वगैरह नहीं लगाए हुए थे और वो उन्होंने कॉपी कर लिया, और जब वो फीचर्स उन्होंने कॉपी कर लिए तो योर प्रोडक्ट विल लूज दिस यूएसपी, और जब उसके पास यूएसपी नहीं होगी तो डिमांड भी इनइलास्टिक नहीं रहेगी. सही है, so how the competitors will react to the product and how customers will react. This is also very important. Like for example, अगर आप अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, सही, और करते जा रहे हो, पैसे लगा रहे हो, बट स्टिल द एडवर्टाइजमेंट इज नॉट सक्सेसफुल, या आपकी जो टारगेट मार्केट है वो उसको वॉच नहीं कर रही, और उसका जो है ना वो इंटरेस्ट गेन नहीं कर रही, सो इट वोंट बी वेरी फ्रूटफुल फॉर द फर्म. So and when it won't be fruitful, the elasticity won't change. So whether it is possible or not depends upon how the competitors are reacting to advertisement, whether you are able to make it more elastic or not, whether you will eliminate the competition successfully, whether you will introduce the substitute successfully, and how the customers will react to marketing, advertisement, and everything. सही है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो है ना काफी इससे मिलते जुलते क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ जाते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स किस तरह से चेंज कर सकते हैं, whether it is possible for the businesses and government to influence the value of PET. So whenever it is about the influences, आपको बताना पड़ेगा कि किस तरह से आप PET को इलास्टिक कर सकते हो, किस तरह से आप PET को इलास्टिक कर सकते हो, और whether it is possible or not depends upon circumstances such as the reaction of the competitors, the action of the customers, and so on and so forth.